बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल टाउन ग्रीन क्रिकेट क्लब ग्राउंड से हम आपको यहाँ से खुशामदीद कहते हैं। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 कप 2022 के सिलसिले में आज का ये दूसरा मैच P&T जिमखाना और अलीगढ़ क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला जा रहा है और सुहेल अदरीस जो कि मैच रेफरी हैं वो टॉस करवाएंगे दोनों कप्तानों से, जिन P&T की टीम के कप्तान हैं सैयद असद रज़ा, जबकि अलीगढ़ की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं इम्तियाज़ तारड़। तो सुहेल अदरीस साहब की गुजारिश है कि वो टॉस करवाएँ और असद रज़ा ने और हेड कॉल किया गया है जी। अलीगढ़ ने टॉस जीता है और इम्तियाज़ तारड़ क्या फ़ैसला किया आपने? जी बैटिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी कोई रीज़न, क्योंकि विकेट पहले भी देखा कि काफ़ी रन्स बने हैं पहले बैटिंग जिन्होंने की, तो यही रीज़न है आपका भी? जी बिल्कुल जी, विकेट फ्लैट है तो वो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टारगेट दें टीम को। तो वो फिर इंशाल्लाह ताला मिनिमम हम 200 पे इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे, तो इतना हम करेंगे। बैटिंग स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, कितने नंबर तक आपकी बैटिंग है? ऑलराउंडर भी हैं इसमें शामिल? बिल्कुल, हमारे तकरीबन जाएंगे और 200 करेंगे। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ तारड़ साहब, गुड लक फॉर यू। और अब सैयद असद रज़ा साहब, असद साहब टॉस हार गए, क्या कहेंगे? अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? अनफॉर्चुनेटली टॉस तो हमारे को, अगर टॉस जीते तो अभी मैच हमने देखा है तो बहुत अच्छा टोटल किया था पहली टीम ने टॉस जीत के। तो अभी जो है गुड लक दूसरी टीम के लिए और हमारे लिए भी कि हम इंशाल्लाह ताला इनको कम से कम टोटल में आउट करेंगे और मैच विन करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपकी जो ये जो विकेट है इसमें आप क्या कहेंगे कि बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग पर ज़्यादा निसार करेंगे या स्पिन पे? लास्ट मैच उस तो कामयाब हुई है, तो हम स्पिनर जो है हमने 3 डाले हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह ताला स्पिन से जो है ना हम फ़ायदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच असद। तो सामिन, टॉस जीता है इस वक्त अलीगढ़ के इम्तियाज़ तारड़ ने और पहले खुद ही बैटिंग करने का फ़ैसला किया है और वी टेक यू बैक टू द स्टूडियो फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द मैच। थैंक यू वेरी मच। आवाज़ अब आएगी आपको, इसमें से आएगी ना, इसमें डिस्टॉर्शन आएगी। ओहो, अगर फ़र्ज़ करें मैं अब वो बोलें, माइक लेके आए, मैं बोलता हूँ, वैसे आपने चेक कर सकते हैं ना हम लोग?
हेलो 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 हैं हेलो 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 सही है दोनों टीमों के खिलाड़ियों से गुजारिश है कि वो ज़रा लाइन अप हो जाएं। देखें आवाज़ सही आ रही हेलो हेलो हेलो
विक्ट्री में बड़ा इन्होंने किरदार अदा किया और इमरान खान साहब की क़यादत में भी इनको खेलने का मौका मिला। तो इन्होंने अभी तक मतलब पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट खेले, जिसमें 54 ओडीआई भी उन्होंने खेले। 1984 से 1995 तक उनका कैरियर महदूद रहा और इनकी बड़ी माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खिदमात रहीं। वेलकम कहते हैं मंजूर लाई साहब आपको मॉडल टाउन ग्रीन क्रिकेट क्लब ग्राउंड से। कैसा देखते हैं आप फतेह शेर खान क्रिकेट टूर्नामेंट को इसमें? जी, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और प्लेयरों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको मौका मिला खेलने का और अपना जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाने का मौका मिला है। और मैं डार साहब की वो मतलब अप्रिशिएट करता हूँ कि हमेशा ये क्रिकेट की फ़रोग़ के लिए लगे रहते हैं और उसमें ये होता है कि बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है परफॉर्मेंस दिखाने की, उसकी वजह से आगे उनको चांसेस मिलते हैं। क्लब क्रिकेट बहुत कम हो गई थी, टूर्नामेंट्स बड़े कम हो रहे थे, तो अब थोड़ा सा रिवाइव हुई है क्लब क्रिकेट और रमीज़ राजा साहब के आने से भी बड़ा फ़र्क पड़ा है, आपको समझते हैं इसमें? बिल्कुल जी, उन्होंने क्रिकेट को मतलब जैसे हमारे क्लब क्रिकेट जो से उसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि असल बेस तो क्लब क्रिकेट है जैसे हमने भी खेली है। और मैं जितनी भी तारीफ़ करूं डार साहब की वो कम है, वो अपनी जगह उनकी मेहनत उनकी कोशिश जो है क्लब क्रिकेट के हवाले से, और ये दोबारा से जो इक़दाम क्लब क्रिकेट का हुआ, क्रिकेट हमारी दोबारा से जाग जाएगी। तो नबील अहमद साहब इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं टूर्नामेंट्स को पूरे को। मैं सुना है, बड़ा अच्छा लगा है मुझे, डार साहब ने बताया मुझे, और मेरा ख्याल ये एक बहुत अरसे बाद ऐसा एक दलेर आदमी निकला है जिसने टूर्नामेंट के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, और मैं दलेरी समझूंगा। उससे पहले हम जब क्रिकेट खेलते थे वो क्लब क्रिकेट की वजह से ऊपर था, जैसे हमारा मनकुमरी क्लब था और डार साहब क्या यहाँ से जित माल टाउन ग्रीन में और पूरे लाहौर में बड़ी अच्छी मतलब टीमें थी, और उस क्लब क्रिकेट की वजह से इतने टेस्ट प्लेयर बने हैं। वो भी नए जो सिस्टम आया उसमें उम्मीद है इंशाल्लाह क्लब क्रिकेट को रिवाइज़ करेंगे, और स्कूल क्रिकेट रिवाइज़ हो रही है, कॉलेज क्रिकेट हो रही है, और जो यहाँ पे लाहौर में और क्रिकेट हो रही है, तो बहुत अच्छा इक़दाम है प्लेयर्स के लिए और हमारे यंगस्टर्स के लिए। अच्छा मंजूर भाई, ये है कि अब उस वक्त T20 फॉर्मेट नहीं था आपके ज़माने में, तो अब T20 क्रिकेट आ गई है इसमें, तो आप क्या कहेंगे T20 के आने से क्रिकेट कुछ ज़्यादा नहीं हो गई? क्रिकेट ज़्यादा ही हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है इतना क्रिकेट तो वही है, बैट बॉल तो वही है, इसमें थोड़ा सा आपको सेंस खेलना पड़ता है एक सेंस के हिसाब से कि मैंने T20 खेल रहा है, मैंने अपने स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, वो क्लब क्रिकेट में भी वही दे रहे हैं हम सिस्टम उनको, ताकि वो आगे उनके लिए खेलना आसान हो। बहुत शुक्रिया। ये थे मंजूर लाही, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान। तो हम अब आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं फॉर द नेक्स्ट मैच। थैंक यू। बड़ी गल है, बड़ी गल है दलेरी मैच है बड़ी गल। So once again, welcome you back here in the Model Town Green Cricket Club ground. And the second match of the day about to commence, and the first delivery has bowled by the bowler. And this match has been playing between the P&T Gymkhana and Aligarh. Aligarh cricket captain won the toss and decided to bat first. Their both openers are in the middle. Here he goes, balls to the batsman, and he tried to
a leg lance, but wrapped on his pad, and there's no damage done. Score remained 1-4, no wicket. Aligarh Cricket Club won the toss and decided to bat first. The field position is keeper standing back, it slips. It's a cover point, extra cover, it's mid-off, and deep third man, which is on the boundary line. In the onside, it's a wideish mid-on, short mid-wicket, and deep square leg, which is on the boundary line. Here's once again the bowlers comes in, and he bowls to the, that's a good delivery outside the off stump, and nearly into his off stump, and the ball went into the hands of the wicket keeper behind the stump, and there's no runs again. One for no wicket, Aligarh Cricket Club. And Mahaz and Asad, they both are in the middle. Asad comes in once again from the road end, and he bowls to Mahaz. He drives into the long off. Will be pick up a boundary. Yes, it's over the ropes for 4 runs. That's a magnificent stroke, delightful one, and over pitching, and he drive handsomely into the long off and picked up the boundary. So 5 now for no loss. And Aligarh, they are flying start. And this is the first boundary of the match. Former Test cricketer Manzoor Allahi. He was the chief guest of the first match between Shah Kamal and Punjab Club. The next delivery, over pitch and drive firmly into the deep mid-wicket region, and that's no chance for any fielder, and the ball has crossed the boundary line, and that's going to be 4 runs. It's 9 for no wicket, and this is the first over in progress. A little bit of clouds hovering over the sky, the sun a little bit disappear, but over breeze here and a very fine weather for cricket. Once again, Asad reaching the top of his mark from the road end, and the man is facing to him. It's Mahaz. He's not out on 8. Facing up to him, comes in and ball to Mahaz, and outside the off stump, beaten this time, but umpire says wide. And 2 umpires who are supervising, umpire Muqeed and Tariq Rashid. And Sohail Idris is the referee. Fateh Sher Memorial Cup 2022 is under progress, and in Mardeltown Green Cricket Ground, which is organizing all the tournaments. Next ball, Asad comes in and bowls to Mahaz off the back foot, punch into the extra cover, and there's a fielder and there's no addition in the total, which is 10 for no wicket. Plenty of spectators are watching the proceeding of this match. For no wicket, Aligarh Cricket captain won the toss and decided to bat first. The spinners coming on from the Pullian end, and Aligarh Cricket captain. No, it's medium pacers looking like big stance. It's a left arm, I think. So 10 for no wicket, Aligarh. And now Asad, he has yet to get open his account, facing up to the next level.
Jabbar once again, and the ball went into the deep fine leg, and the batsman picked up a single. It's 11 for no wicket. Asad and Muaz, they both are in the middle. Jabbar once again, he comes in, and that's off the back foot, and played it cautiously into the short mid wicket, and there is no addition in the total, which is 11 for no wicket. That's a good delivery, top edge, and running into the backward point. It was a good delivery, attacking into the right-hander, and the ball took the outside edge and running down to the cover point area, and there's no addition in the total. 11 for no wicket. Mahaz once again facing up to the next delivery. Jabbar from the pavilion and left arm, and now facing up to Mahaz once again, running in now, and he bowls to Mahaz in not out on 8 with the help of 2 fours, and the running down to the deep backward point area. The batsman picked up a single, and that score moves now to 12 now for no wicket. This is the second over in progress, which is bowling Jabbar from the pavilion end. Now Asad taking the strike now. He's not about to yet to get off the mark, facing up the next delivery. Here he goes, and ball to Asad. Over pitch and drive firmly. This will be the 4 over the ropes. No chance for any fielder, and the ball has crossed the boundary line, and that's going to be 4. So score moves now to 16 now, and this is the second overs in operation. Asad has opened his account. He's not out on 1, and Mahaz is not out on 7. Look at that delivery. Over pitching, and he drives quite firmly into the deep whitish mid-on and picked up the boundary. It's 16 now for no loss. And this time he pulled and pulled well, and we have waited for the umpire signal, and it's gone for 6 over the deep square leg this time. So 22 for no wicket, and Asad moves now into the double figure. He's not out on 10, and score is 22 for no loss. Jabbar, look at that action replay. He played into the deep square leg and picked up 6 more runs. 22 for no loss, Garh, after winning the toss and decided to bat first. And this is the end of the second over, and their average is exactly 11 runs per over at the moment. The field changing over, and one fielder who was fielding at the deep mid wicket, in the place of him, other fielder has been sending back into the deep mid wicket. The field changing is he is coming into the mid off side. Now Mahaz is not out on 9 in 7 balls, facing up to Syed Asad. He runs in now, and that's attempted joker right into the block hole, but he played well and played it into the short mid wicket, and he takes another single. It's 23 for no wicket, and this is the third over in progress. Once again, the sun has come out, and excellent weather for cricket in Lahore. Model Town Green Cricket Club, which is very old club, and
His president is Shoaib Dar. He's running this club for a long, long time. A very vital role for promote the cricket in Lahore. Once again, the Asad comes in and the next delivery, turn it away, pass the square leg. There's no fielders there and the ball has crossed the ropes and that's going to be another boundary. So 27 now for no wicket and Asad is not out on 14 and Mahaz is not out on 10. Look at that action replay. He turned very neatly into the deep backward square leg and gets 4 more runs. 27 for no loss and Asad once again running in now from the road end to bowl to Asad. He comes and bowl to Asad and outside the off stump, beaten this time and the ball goes through to the wicket keeper and there's no runs again. 27 for no wicket by Ali Garh. The 2 umpires who are supervising this match again, it's Abdul Makid and Tariq Rashid and referee is Suhail Adris and over scorer is Waqar Rahman. Asad once again up goes arm and he bowls to Asad and he played it well back to the bowlers and there is no addition in the total which is 27 for no loss. This is the 3rd over of the innings. 2 deliveries remaining of the 3rd over. Asad, right arm and he bowls to Asad and he tried to big hit but the ball is going down to the deep backward square leg and he could take only a single. 28 now for no loss and Asad moves across now to 15 by virtue of single. He has just faced 8 deliveries. Now Mahaz is not out on 10 in 8 deliveries facing up to the last delivery of this over of Asad. He runs away for us and ball to Mahaz. Comes and ball to Mahaz and what a magnificent stroke over the top of the fielder into the long on, over pitch delivery and he played beautifully square of the wickets into the onside and gets a boundary. 32 now for no loss and Mahaz moves now to 14. Look at that stroke. Excellent footwork shot by this man and hits a boundary into the long on. .32 for no wicket. Ali Garh Cricket Club won the toss and decided to bat first. So Jabbar will be continuing from the pavilion end. Asad, he is not around 15. Over pitched and there's chance for a catch. No, it's over the top of the fielder at extra cover and will be a couple of runs and meanwhile the return comes in into the wicket keeper ends and the batsman takes 2 more runs. So 34 now for no wicket and this is the 4th overs in progress. Colonel Fateh Sher Memorial T20 Cup 2022. This is the second match of the day and the first match played between Punjab Club and Shah Kamal. Shah Kamal won the match by convincing margin of 27 on next delivery and he swung it away past the square leg, little bit of sloppy fielding and the batsman take one, wants for second but sends him back by his partner into his crease and there's only a single.
35 for no wicket, and this is the fourth overs in progress. Asad not out on 18 and Mahaz is not out on 14. This match is a live telecast in the Metro Sports 35 for no loss. Here's Jabab once again, left arm to bowl to Mahaz. Comes in, ball to Mahaz. That's a good delivery outside the off stump, appealing by wicketkeeper and the teammates, but unmoved by umpire Tariq Rashid. Such a beautiful delivery, moved away into the right-hander, and he comprehensively beaten. Score is still 35 for no wicket, and this is the fourth overs in progress. Here's Jabbar once again, left arm, and he bowls to, that's a very flourishing play into the offside. He takes a single rather quickly, and if the return hits into the stump direct, then wouldn't be the out. So he survives, so score moves now to 36 now for no wicket. Asad, he's not around 18, facing up the next delivery. That's a very delightful stroke, absolutely delightful stroke, and there's no chance for any fielder, and the ball has raced away for 4 runs. Short lifting, and he look at that action replay very sophisticatedly, and look at that, absolutely fantastic. So he moves now to 22. He has just faced 12 releases, 40 now for no wicket. Very good start by Aligarh Cricket Club. Asad once again facing up to the next delivery of Jabbar, once again racing in, left arm up to the wicket and over pitching, and he tried to big hit into the onside, wrapped on his pad and trickle out into the slim it off, and there's no addition in the total. So end of the overs, the 4 overs gone, and score is 40 for no wickets by Aligarh Cricket Club. Asad is not out on 22 and Mahaz is not out on 15. Bowling change coming on. Now it's Jabbar once again, the batsman plays it into, it's Adnan coming on in the place of Jabbar. It's batsman takes a single. It's 41 for no wicket. And this is the 5th overs in progress. In comes Adnan once again. Left arm, he comes in and bowls to Mahaz.
And he swings it around. We have wait for the umpire signal, and it's over the ropes, and that's going to be another 6. Asad is looking quite aggressively at the moment, and he has hit his second 6 of the innings. He's not out on 28 in just 13 deliveries. 14 deliveries he has faced so far. So it's 47 for no wicket, Aligarh Cricket Club. Adnan once again, his left arm to bowl to Asad. Here he goes. Ball to Asad, drives handsomely, and there's a chance for a catch. No, it's over the top of the fielder at the deep extra cover to cross the boundary line for 4. Really brisky hit by Asad once again over the extra cover. The ball was high in there, long time. Look at that. Over pitching, a drive without too much power behind the stroke, but one bounce for cross the boundary line for 4 runs. 51, 50 up now. It's 51 for no wicket by Aligarh. Next delivery, and it's hard and high into the deep cover, and one bounce for another boundary for Asad. He's not out on 36 now. .55 for no wicket. And this is the 5th overs in progress. In comes Asad once again. And the next delivery, he hits beautifully. And we have a chance for a catch. Yes, he's gone. The ball high in the air, it tried to swing around, but the ball went high in the air, and that's the end of the evening of Asad, out for 36. Such a wonderful knock. He just faced 16 deliveries and hit 2 sixes and 4 fours. Out for 36, 55 for the loss of 1 wicket of Aligarh Cricket Club. So it's 55 for 1, and Aligarh Cricket Club, they are flying start with Asad is out for 36. He faced 16 delivery, just 2 sixes and 4 fours. So 5 overs has completed, 55 for the loss of 1 wicket by Aligarh. So Umar is the new man in. So it's Adnan and Mahaz is not out on 16. It's bowling chain coming on. We have wait for the bowler name. And the
next delivery is played it into the long leg fence, and that's going to be another boundary. 59 now for the loss of 1 wicket. Running down to the long leg, and he gets the boundary. So 59 for the loss of 1 wicket. And Mahaz moves now to 20. It's 59 for the loss of 1 wicket. So Umar, who was the hitter on the ball, not Mahaz. Umar gets the boundary, played it into the long leg. So it's 59 for the loss of 1 wicket. Wasim has been brought back into the attack. Left arm, he comes in, ball to Wasim. Once again, the ball, perhaps we have wait for the umpire signal. Either it's a play down. Another fine sweep from Umar. The fine leg area. Look at that delivery. Yes, it's played on, running down to the fine leg, and that's another boundary. So 63 for the loss of 1 wicket, and Umar moves now to 8. Fine start from Aligarh cricketer, both opener, and now the one-down batsman Umar hits 2 consecutive boundary in the similar fashion. The next delivery, he played it into the offside, and the return shy into the stump, but the batsman was well in home. 64 for the loss of 1 wicket. Umar is not out on 9. Facing up this time Mahaz plays it gently into the short mid wicket, and there is no addition in the total. 64 for the loss of 1 wicket. And this is over number is 6 in progress, which is bowling by Wasim. He comes in, and the balls to the batsman was Mahaz, plays it gently into the offside, and he takes another single. 65 now for the loss of 1 wicket. Fateh Sher Memorial T20 Cup 2022. Today the second match of the day, which is playing between the Aligarh Cricket Club and P&T Gymkhana, which is a very renowned club, which has produced number of test cricketers in Pakistan, which included Imran Nazir, Muhammad Yusuf, Javed Miandad, Abdul Razak is a big name. He was a very good all-rounder, and owner of this club is Azazadi. He has a much contribution for the Pakistan to produce many test cricketer in his club. He's also the former manager of Pakistan cricket team. Azazadi, very renowned name in the club cricket of P&T Gymkhana honor. And the next delivery, Adnan once again, and he plays it gently into the long leg. Will be couple of runs. The fieldsman cuts it off into the boundary line, and the batsman picked up 2 more. 67 now for the loss of 1 wicket. Back goes Adnan once again, reaching the top of his mark. Mahaz is not out on 19. Umar is not out on 9. And this time he swings it around, but that's a very fantastic fine piece of fielding from the fielder at the boundary line. He just stopped the ball with one hand and saved the boundary at the boundary line. Look at that. Nicely swept. And the fieldsman quite slipped there, but he picked the ball at the last moment with his one hand and stopped the boundary. Next delivery, and he hits over the deep extra cover, and that's going to be over the boundary line, another 6. This time Umar hits the 6. He's not out on. It was over pitched, and he drives in one action, and he hits the 6 more runs into the deep extra cover. So 74 for the loss of 1 wicket. In comes Adnan once again, left arm, and that's a reverse sweep try to that one, but the ball goes to the wicket keeper, and he collects behind, and there is no addition in the total, which is 74 for the loss of 1 wicket, and this is the 7th overs in progress. Here comes Adnan reaching the top of his mark. He comes in, and he bowls to the next delivery. The batsman plays it back to the bowlers, and no, there is no addition in the total. Second match of the day of the
Garh Fateh Sher Memorial T20 Cup 2022 is being played here in the Model Town Green Cricket Club ground. Next delivery outside the stump, umpire Abdul Makid given away the wide, so 75 for the loss of 1 wicket. Adnan reaching the top of his mark. He comes in now to bowl to Umar. Once again comes in ball to Umar. Umar drives that one and into the deep square leg, and he picked up a single once for second, but sends him back by the partner, and there's only a single. So it's 76 for the loss of 1 wicket. End of the over number 7. Mahaz is not out on 20 in 17 deliveries. Umar is not out on 16 in 8 deliveries. Anis from the pulling end to ball to Umar, drives through the long off. The batsman ambles across for a single. It's 77 for 1, and this is the 8th overs in progress. Mahaz not out on 20, facing up to Anis. Anis Ahmad, left arm from the field, right arm from the field end, and he played at a square of the wickets into the deep square leg, and the full toss that was, and he had plenty of time to play that stroke into the onside, and deep square leg he gets another boundary. Look at that action replay once again. Little bit full toss, and he had more time to play that stroke into the deep square leg. The ball hit into the signboard, and he gets a boundary. 81 now for the loss of 1 wicket, and Mahaz moves now to 24 now. Here is the next delivery. That's kept a little low, and he played it into the offside, and he just takes another single. 82 now for the loss of 1 wicket. The sun once again is shining quite brightly, and the breeze is moving around, but still a very good weather today for cricket. And a lot of spectators, they are watching the proceeding of this match, and this match is a live telecast in Metro Sports, and anybody can see that the link of Metro Sport to see this match. The next delivery drives us into the, and that's picked up a magnificent catch, returning catch from bowlers, and that's the end of the inning of Umar. That's a very fine dismissal. Anis picked the catch, moving on his backside, and picked up a very nice catch, running at the end of the innings of Umar. 82 for the loss of 2 wickets now. Umar is out for 17. So 82 for the loss of 2 wickets, and this is the 8th overs in progress.
please. And whips it away, and we have a wait for the umpire signal. It's over the ropes for 6. Very first, Muhammad Khalil hits the boundary, and he has opened his account, not out on 6. 88 now for the loss of 2 wickets. This match tournament is sponsoring by Nabil Ahmed. He is the owner of Michigan Cricket Stars professional team in Minors Cricket Leagues USA, and he is also the former CEO of United States Cricket Association. So it's 89 for 2, and this is the end of the finishing of 8 overs. Maz is not out on 32 and just faced 1 deliveries. And Muhammad Kaleem is the new man in. So it's 89 for the loss of 2 wickets. Mahaz is not out on 32. It's a Wasim will be to continuing from the road end, and Mahaz, he has just faced 22 deliveries and not out on 32. There are 20 teams are participating in this tournament. The next delivery over pitching and a drive. That's a fine choice of fielding. Dived on his right side and stopped the ball and saved certainly 1 or 2 runs. So score is 89 for the loss of 2 wickets. Next delivery, and this time the batsman played it gently into the on Slimidon. The fine picked up on his follow through by the bowler. Wasim has bowled to 1 overs and has given away 10 runs. Three deliveries gone, and now is once again coming back from the road. And the next delivery, it's a short pitch delivery, and he played it into the long off, and he takes another single. 90 now for the loss of 2 wickets, and this is the 9th overs in progress, which is bowling by Wasim. 11 runs he has given so far. Here he goes once again from the road end to bowl to Khalil. I say Kaleem. He's played it gently into the offside of the back foot, and there is no addition in the total. 90 now for the loss of 2 wickets, and this is the 9th overs of the last delivery. Once again, they very gently played it into the offside in the similar fashion. End of the over, so it's the 9 overs has just finished now. It's 90 for 2 by Ali Garh.
96 for 2, and 9.1 overs has completed. So Muhammad Kaleem and Mahaz, they both are in the middle, and it's Anis once again will be to continue the next delivery. The batsman played it into the own side, and the fieldsman runs around, pick the ball, and meanwhile both the batsmen gets one more run. So 97 for the loss of 2 wickets. Muhammad Kaleem is at striker end, and Mahaz is not out on 41. So 97 for the loss of 2 wickets. In comes Anis once again, racing in, and balls to clean. That's played it very gently into the offside. Will be a couple of runs. No, it's coming back for second, but return comes in into the wicket keeper. Fine piece of fielding by the fielder at deep extra cover. So one more is 98 now for the loss of 2 wickets, and Kaleem has opened his account. 98 for 2. Now Mahaz is not out on 40 in 27 deliveries, facing up to Anis. He comes in once again, right arm, and ball to Mahaz off the back foot and punches into the cover point area, and there's no addition in the total, which is 98 for the loss of 2 wickets. Rafe we have with us, and he will further explain the cricket commentary. Thank you so much, Tahir Amin. कदमों का इस्तेमाल, एक ही रन बन पाएगा। नौ इशारिया 5 ओवर हो चुके हैं और स्कोर है 99। तकरीबन 10 की एवरेज लेकर चल रहे हैं अलीगढ़ क्रिकेट क्लब। शॉट ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन बॉलर ने मौका नहीं दिया। इसके साथ ही 10 ओवर्स का खेल खत्म। 99 11वें ओवर का खेल जारी है। महाज इस वक्त सामना कर रहे हैं वसीम का। रन लेना चाह रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से नो की कॉल हुई। वसीम इस वक्त अपना तीसरा ओवर करवाते हुए अच्छी ड्राइव की, 1 रन के लिए लॉन्ग ऑफ की तरफ। महाज एक बार फिर सामना करेंगे वसीम का। कट की है और अच्छी फील्डिंग फील्डर की तरफ से। अलीगढ़ इस वक्त समझदारी से बैटिंग करते हुए यहाँ पे जरूरत है P&T को विकेटों की। लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है 1 रन के लिए महाज ने। इसके साथ ही 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल। स्कोर है 102, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर।
कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप 2022 sponsored by Nabil Ahmed, organized by Model Town Dreams Cricket Club Lahore। ग्रुप स्टेजेस का 8वां मैच आपकी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव नबील अहमद का, यंग क्रिकेटर्स और क्लब क्रिकेट को लाइव कवरेज देना एक अच्छा ट्रेंड नबील अहमद की तरफ से। कट किया है, बहुत ही अच्छी शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, अच्छी फील्डिंग, डाइव लगाकर रोकी बॉल, एक ही रन बन पाया। अलीगढ़ का स्कोर बढ़ते हुए 104, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अनीसा है नए बॉलर, अच्छा रन अप अनीस का, शॉट लगाई है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, खासी दूर की दी फील्डर से, एक ही रन बन पाया। महाज 34 गेंदें खेलकर 44 रन बना सके अब तक। अलीगढ़ की टीम को स्टैंड दिया हुआ है एक एंड से महाज ने। नौ इशारिया 18 का रन रेट चल रहा है अलीगढ़ की टीम का। शॉट लगाई है डीप मिड विकेट की तरफ, 6 रन के लिए। अच्छी शॉट महाज की तरफ से, और इसके साथ ही उसकी महाज की 50 भी मुकम्मल हुई। जानदार स्ट्रोक खिला, अच्छी शॉट लगाई है, 6 रन के लिए। महाज की निफ सेंचुरी कंप्लीट हुई है। अलीगढ़ का स्कोर बढ़ते हुए 110, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अच्छी बॉल, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी टाइमिंग महाज की तरफ से। 4 रन के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर बॉल। अच्छी बैटिंग करते हुए महाज, यहाँ पर 54 रन है महाज के, 36 गेंदें खेल चुके हैं। अलीगढ़ का स्कोर बढ़ते हुए 114, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अनीस को मौका नहीं दिया कि वो बॉल को कट करना चाह रहे थे, एक ही रन बन पाएगा। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप 2022 ग्रुप स्टेजेस का 8वां मैच इस वक्त खेला जा रहा है अलीगढ़ क्रिकेट क्लब और P&T क्रिकेट क्लब के दरमियान। अच्छी बॉल कराई है, कवर्स में खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक रन और बन पाएगा। इसके साथ ही 12 ओवर का खेल मुकम्मल, स्कोर है 115, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर।
ड्राइव किया है मोहम्मद कलीम ने 1 रन के लिए। अनीस एक बार फिर थोड़ा नीचे रही बॉल और बीट हुए हैं बैट्समैन। यहाँ पर महाज मिड विकेट की तरफ शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन बॉल खासा नीचे रहा जिसकी वजह से बीट हुए। एक बार फिर शॉट लगाई है मिड विकेट की तरफ। एहसन है बॉलिंग पर अपना पहला ओवर करवाते हुए। सामना कर रहे हैं मोहम्मद कलीम। अच्छा बॉलिंग एक्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है और बिल्कुल आसान सा कैच, फील्डर के हाथों में गेंद। एक और झटका अलीगढ़ की टीम को। अलीगढ़ की टीम यहां पर तीसरा नुकसान उठाते हुए महाज पवेलियन वापस जाते हुए अच्छी इनिंग कर गए हैं। रिप्ले में देखिएगा क्या हुआ है इनके साथ। खड़े खड़े शॉट लगाना चाह रहे थे एक्स्ट्रा कवर की तरफ और बिल्कुल आसान सा कैच ऑफ साइड पे खड़े फील्डर के पास। एक 118 पर 2 आउट हैं, 3 आउट हैं अलीगढ़ क्रिकेट क्लब के। एहसन नए बॉलर हैं जिन्होंने आते साथ ये पार्टनरशिप ब्रेक की, जिसकी शदीद जरूरत थी पीएनटी की क्रिकेट क्लब को। हैदर नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं। आउट होने वाले बैट्समैन मोहम्मद कलीम। अपनी चौथी ही गेंद पर मोहम्मद कलीम को चलता किया एहसन ने। अच्छी बॉल और बीट हुए हैं बैट्समैन हैदर। अच्छी बॉल को डिफेंड नहीं कर सके। आखिरी बॉल करवाएंगे एहसन 13वें ओवर की। अच्छी बॉल और एक बार फिर बैकफुट पे पंच किया है। चौदहवें ओवर का खेल जारी है और अलीगढ़ का स्कोर है 118। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर कदमों का इस्तेमाल किया है। फुल टॉस बॉल को खेला है लेग साइड की तरफ और 4 रन। अच्छी शॉट महाज की तरफ से। एक बार फिर महाज 60 पर खेल रहे हैं इस वक्त अलीगढ़ की तरफ से। देखिएगा ये स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल किया और फाइन लेग की तरफ शॉट लगाई। के साथ ही 122 पे चली गई अलीगढ़ की टीम। एक बार फिर बड़ी शॉट लगाना चाह रहे थे लेकिन बीट हुए इस बार अदनान, जो कि अपना तीसरा ओवर करवाते हुए। बिल्कुल थोड़ा सा जज किया है कि किस बॉल को खेलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं महाज। उन्होंने बिल्कुल वो बॉल नहीं करवाई। अच्छी बॉल एक बार फिर
संभल के बॉलिंग करवाते हुए अदनान। यहाँ पर महाज के लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा अदनान को खेलना। अच्छी बॉल, एक बार फिर शॉट लगाई है फाइन लेग की तरफ, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। 6 रन के लिए, बाउंड्री लाइन से बाहर। रिप्ले में देखिएगा किस तरह पहले से ही जज कर ली थी बॉल, फ्लाइटेड बॉल थी और भरपूर फायदा उठाया उसका। फाइन लेग की तरफ एक ऊंचा स्ट्रोक 6 रन के लिए महाज की तरफ से। महाज मूव टू 66 ऑन 43 बॉल्स। तेरह इशारिया 4 ओवर्स अब तक हो चुके हैं। अदनान अपनी 5वीं बॉल करवाते हुए, फ्लाइटेड बॉल और एक बार फिर लेग साइड पे खेला है, फील्डर है वहां पर मौजूद, 1 रन ही बन पाएगा। यहाँ पर पीएनटी की टीम को चाहिए कि जितनी कोशिश हो सके, एक बार स्ट्रोक किया है, अच्छा शॉट और सीधा 1 रन के लिए। हैदर के बल्ले से भी स्ट्रोक निकल रहे हैं। इसके साथ ही 14 ओवर का खेल मुकम्मल। स्कोर है 129, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अच्छी बॉल एसन की तरफ से। अपने पिछले ही ओवर में पार्टनरशिप ब्रेक की मोहम्मद कलीम को आउट करके एसन ने 130 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं अलीगढ़ की टीम के। हैदर सामना कर रहे हैं एसन का, कट करना चाह रहे थे लेकिन अच्छी बॉल एसन की तरफ से। बिल्कुल अलीगढ़ के बैट्समैन को संभल के खेलना होगा इस एसन की बॉल्स को। लेग साइड भी तरफ खेला है, चेस करेंगे फील्डर, बिल्कुल कोई मौका नहीं इस वक्त। 4 रन के लिए हैदर ने स्ट्रोक लगाया है, 4 रन के लिए, बाउंड्री से बाहर खेलना चाह रहे थे। बिल्कुल एक पहले से ही जज कर लिया बॉल को और लेग साइड की तरफ शॉट लगाई। पकड़ सकते थे फील्डर यहाँ पर बॉल को, लेकिन एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है, कोई मौका नहीं बॉल फील्डर के लिए। एक और बाउंड्री मिलेगी यहाँ पर हैदर को। बहुत ही उम्दा बैटिंग यहाँ पर हैदर की तरफ से भी। अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर हैदर। कदमों का इस्तेमाल किया है, एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है और कोई मौका नहीं यहाँ पर। एक बार फिर फील्डर के लिए 4 रन का मजीद इजाफा हैदर की टीम को सहारा देते हुए। हैदर यहाँ पर एक अच्छे टोटल की तरफ लेकर जा रहे हैं अलीगढ़ की टीम को। हैदर और महाज अच्छी बॉल कराई है, बड़ी हिट लगाना चाहते थे, एक बार फिर बीट हुए यहाँ पर हैदर। इसके साथ ही 15 ओवर का खेल मुकम्मल। स्कोर है 144, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। रिप्ले में देखिएगा, कदमों का इस्तेमाल किया है और अच्छी शॉट लगाई है 4 रन के लिए।
इसके साथ ही 15 ओवर का खेल मुकम्मल। स्कोर है 144, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन किया है ताहिर अमीन ने। Thank you, Rafi. So 144 for the loss of 3 wickets and end of the finishing of 15 overs. And the first delivery of the first of this over, the batsman played it high in the air, and that's picked up a fine catch by the fielder, a running catch at the mid-wicket area, and he came quite quickly and runs away a long time, and he picked up a beautiful catch, and that's the end of the innings of Haider. He's out for 15, caught by at the deep mid-wicket by the fielder of Hassan, picked up his second wicket, and 144 for the loss of 4 wickets. On the other hand, it's Mahaz is not out on 67 in 44 deliveries. Look at that action replay of Wasim, short mid delivery, a ball high in the air, long time, and very fine running catch by the fielder. He didn't mistake and picked up a fine catch. So 144 for the loss of 4 wickets by Aligarh Cricket Club. Here's the new batsman in. It's Mahaz is out. He was out for 67. And meanwhile, the new batsman, it's Javed, hits the boundary. And 148 for the loss of 4 wickets. Wasim once again. And he bowls. Look at that wicket of Mahaz. He really tried hard to pick the boundary, but he was out. The next delivery, he played it beautifully straight into the hands of the fielder at a deep mid wicket, and that's another wicket. That's a second catch of the similar fielder who got the catch of Mahaz, and this is another one. So 150 for the loss of 5 wickets. And this is the 16th overs in progress, and Haider gone for 21. Look at that delivery, short, and he punch well into the deep mid wicket, and the fielder gets a very fine catch in the same position, and that's the end of the wicket of Haider, out for 21. 150 for 4 Aligarh Cricket Club after winning the toss and decided to bat first. Mahaz was the main scorer, out for 67. Next time, meanwhile, it's a batsman played it into the deep whitish mid-on and picked up a single. 151 for 5. And the next delivery played over pitching, and it drives on down to the mid-off. The batsman picked up a single. 152 for 5. Javed and Mubashir, they are on the middle. Both are 1 run each. Next delivery, he drives, there is uppishly,
but safely over the top of the fielder into the deep cover point. The batsman picked up easily 2 runs, and return comes in into the wicket-keeper end, and both the batsmen takes 2 more runs. 154 for the loss of 5 wickets. It's end of the over number 16. 4 remainings now. It's Asad once again, the ball to the new batsman, which is Javed, outside the off stump, and score is still here. It's 154 for the loss of 5 wickets. Aligarh Cricket Club, their average is at this stage, it's 9.69, and Asad once again reaching the top of his mark from the road end to bowl to Javed. He comes in, right arm ball to Javed and turn it away past his square leg. The fieldsman will stop the ball, and meanwhile both the batsmen takes 2 more runs. 157 for the loss of 5 wickets, and this is this 17th overs in progress. Asad is bowling his 3rd over, none for 20s so far, wicketless, and he once again comes in to bowl to Javed, not out on 3, and the other striker, and it's Mubashir is also not out on 3. Here comes Asad, and the next delivery, turn it away. It's a pass the square leg. The fielder is there, and he stopped the ball nearing to the boundary line with his foot, and the batsman meanwhile picked up perhaps 3 more runs. It's 160 now for the loss of 5 wickets. Cricket has been playing throughout the morning in bright sunny sun, which is coming out here, and there's very fine weather for cricket. Look at that stroke he played. The batsman, the fielder stopped the ball with his foot, and the next delivery, it driven into the offside, 1 bounce. Now it's over the ropes for 6 runs. Over pitching, and he hits quite firmly into the deep extra cover region. The batsman was Mubashir. He moves now to 9. Look at that stroke once again in the action replay of Asad delivery, over pitching, and he played it full-fledged off the bat, and elegant looking stroke over extra cover for 6 runs. He's not around 9, 166 for the loss of 5 wickets. Next delivery short, and he pulled well, but fielder is there. He stopped the ball. Little bit of fumble, but only a single. 167 for the loss of 5 wicket, Aligarh Cricket Club. And this is the 17th overs, which is bowling by Syed Asad. Now Javed is taking the strike now to face up the Asad. Once again, racing in, ball to Javed. Down the leg side, umpire called a wide.
Makit expanded both the hands and given him a wide. 167 and for the loss of 5 wickets. In comes Asad once again and running in now to bowl to Javed. Comes and ball to Javed. Try to cut that one. They appeal for catch behind, but disallowed by Abdul Makit because perhaps ball was going outside the off stump and didn't get the touch. 168 for 5. This is the last delivery coming up, and Asad once again. Running in now to ball to Javed. He's not out on 6. Here he goes. Balls to Javed. Down the leg side, and umpire expanded both the hands and given him a wide. 169 for the loss of 5 wickets. This is the 17th overs and the last delivery of the 17th over now. Once again, Asad. He comes in and ball to Javed. Here he goes, ball to Javed outside the off stump, little short, and he leaves it alone. The ball running down to the deep third man after the ricocheting the gloves of the wicket keeper. The batsmen take one and they are coming back for second. Now it's the third one they have taken, so it's 3 more. So 17 overs have. One 72 for 5. So 18th overs starting now. And the first delivery short, and he pulled it away down to the deep mid wicket. The batsman takes a single. 173 for the loss of 5 wickets. This is the 18th over. Tariq Rashid and Abdul Makid, they both are supervising this match along with Sohail Adriz. He is the match referee, and over scorer is Waqar Ahmad. 173 for 5. Mubashir is not out on 10, facing up the next delivery. Full toss, and he hits it beautifully out of the road now, and that's going to be 6. Very powerful hit by Mubashir, and he moves now to 16, and the score is 179 for the loss of 179 for 5. Bashar facing up to the next delivery. Here he goes, balls to, there's a chance for a catch. The ball is high in the air, and fieldsman, wicketkeeper takes the catch. That's the end of the innings of Mubashir. So 6 wicket down, 179 for the loss of 6 wickets.
Bashir made 16 in just 5 deliveries, just 2 fours and he hit and 1 6. Look at that dismissal of Mubashir. He batted high in there, and wicketkeeper captured the cat behind the stump, and that's the end of the innings of Mubashir. 179 for 6. Garh won the toss. He decided to bat first. Imtiaz Sarad is the skipper of Garh, and the next delivery, the batsman played it square of the wickets into the deep extra cover, and they picked up 2 more runs. 181 for 5. Mubashir is still there. He's not out on 16, and Javed is 7. 179 for 5. Perhaps the catch was dropped there by the wicketkeeper, because we could not see the properly on that in the screen. It was looking that he's out, but he's still there, not out on 16. This time the scoreboard has changed, 6 wicket down. That's he's out. Mubashir has gone back into the pavilion. So Fraz is yet to get off the mark. So score is 182 for the loss of 6 wickets, and this is the 18th overs of the innings. Faraz is the new batsman in, and Javed is not out on 10 in the non-striker end. Here he goes, the next delivery, and drive into the deep cover. The batsman picked up 1, and coming back for second, he will have to hurry, and return comes in into the stump, but he is safely in home. 184 for the loss of 6 wickets. End of the over number 18. It's over to for the Urdu cricket commentary. It was Fraz. Thank you so much, ताहिर अमीन, अपनी कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम देते हुए। फराज इस वक्त एक ही गेंद का सामना किया है, जिस पे 2 रन्स बनाए हैं। अलीगढ़ क्रिकेट टीम का स्कोर 184 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर, जबकि 2 ओवर बाकी हैं। जावेद फेस करेंगे इस वक्त अमीन को, अनीस को। अच्छा रनअप अनीस का, बड़ी शॉट लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रन नहीं बन सका। अलीगढ़ की टीम का शुरू से ही एक बार फिर कोशिश की है, रन आउट होने का चांस हो सकता है, और यकीनन करीबी मामला था, लेकिन स्टंप को लगने से बची है बॉल। स्टंप को हिट नहीं कर सके अनीस। दो बॉल बीट कर चुके हैं अनीस। जावेद इस वक्त कोशिश करेंगे बड़ी हिट की, बिल्कुल की है, एक हवा में बॉल है, फील्डर नीचे हैं और ड्रॉप किया है यहाँ पे एक आसान सा कैच। गालबन रोशनी सूरज की आंखों में पड़ रही थी, जिसकी वजह से ड्रॉप किया है एक आसान सा कैच। जावेद का कैच छोड़ा है। अच्छी बॉल करवाई थी अनीस ने।
फराज सामना कर रहे हैं, अच्छी बॉल, एक बार फिर ब्लॉक हॉल में बॉल है और एक ही रन बन सकेगा। अनीस अपने ओवर की चौथी बॉल करवाते हुए अलीगढ़ का स्कोर 186, 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। रन के लिए आए हैं और अच्छी बॉल कराई है, हवा में बॉल है और स्ट्रेट खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन सिर्फ 2 रन बन सकेंगे। अच्छी रनिंग इस वक्त दोनों बैटर्स के दरमियान में। उन्नीसवें ओवर की आखिरी गेंद इस वक्त अनीस करवाने जा रहे हैं। रन अप लिया और ब्लॉक हॉल में बॉल, बहुत ही अच्छा ओवर साबित हुआ इस वक्त अनीस का। अपने लास्ट ओवर में सिर्फ 5 रन दिए हैं, जबकि अलीगढ़ का स्कोर 189 फॉर 6। आखिरी ओवर का खेल जारी है। ये कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल क्रिकेट कप 2022 स्पॉन्सर्ड बाय नबील अहमद। वाइड बॉल करवाई है यहाँ पर और इसके साथ ही आखिरी ओवर में एक्स्ट्रा की सूरत में रन दिए हैं। यहाँ पर सामना कर रहे हैं जावेद। आखिरी ओवर का खेल जारी है, रन अप लिया है, बड़ी हिट लगाई है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, सिर्फ 2 रन का मजीद इजाफा। एक 193 पे 6 खिलाड़ी आउट अलीगढ़ क्रिकेट क्लब के। पीएनटी क्रिकेट क्लब और अलीगढ़ क्रिकेट क्लब के दरमियान मैच, ग्रुप स्टेज का 8वां मैच जिसका आखिरी ओवर करवाया जा रहा है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब में। ये क्रिकेट का रंगारंग मेला सजाया है नबील अहमद, जो कि इस लीग के स्पॉन्सर हैं। जिशान ली एक बार फिर अच्छी बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन एक ही रन बन पाएगा। जिशान अपना पहला ओवर जबकि 3 बॉलें करवा चुके हैं। अच्छा रन अप और बड़ी हिट लगाई है बॉलर के सर के ऊपर से, कोई मौका नहीं फील्डर्स के लिए। 4 रन का मजीद इजाफा अलीगढ़ क्रिकेट के स्कोर बोर्ड में। देखिएगा, पहले ही से टारगेट कर लिया था कि इस बॉल पर ये एक शॉट लगाएंगे। बिल्कुल जैसे ही बॉल उनको बैट के नीचे मिला, उन्होंने बॉलर के सर के ऊपर से उठा दिया। एक बार फिर उठाया है बॉल को और कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। 6 रन, बहुत ही अच्छी शॉट, 6 रन के लिए ग्राउंड से बाहर। फराज को मौका मिला है इस वक्त आखिरी बॉल खेलने का और जिसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं।
सरफराज वाइड बॉल बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, ऑफ साइड से बाहर थी और अंपायर का इशारा वाइड। जिशान का आखिरी ओवर थोड़ा महंगा साबित हो गया है। 2 बाउंड्रीज यहाँ पर लग चुकी हैं ऑलरेडी और लास्ट बॉल आ रही है और ब्लॉक हॉल में बॉल है, बिल्कुल 2 रन के लिए जाएंगे यकीनन। 1 रन से ये इत्तेफाक किया तो इसके साथ ही स्कोर 207, 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर टारगेट दिया है पीएनडी को 207 का, 208 रन का हदफ दिया है। अच्छा टारगेट, एक आइडियल टारगेट दिया है। इससे कबल मैच में भी 200 से जायद का टारगेट था और इस मैच में भी 208 का टारगेट सेट किया है अलीगढ़ क्रिकेट क्लब ने पीएनडी क्रिकेट क्लब के लिए। आखिरी ओवर में सेकेंड इनिंग के साथ हाजिर होंगे आपके सामने कुछ देर बाद। ग्राउंडमैन इस वक्त सेकेंड इनिंग के लिए जाते हुए खूबसूरत किट इस वक्त ज़ेब-ए-तन किए हुए कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 कप 2022 की किट ज़ेब-ए-तन किए हुए खूबसूरत किट इस वक्त ज़ेब-ए-तन किए हुए ग्राउंडमैन
Once again, very warm welcome here in the Marlton Green Cricket Ground, where is the Colonel Fateh Sher Memorial T20 Cricket Cup 2022 is going underway, and the two teams who are playing each other, P&T Gymkhana and Garh Cricket Club, they are both playing each other. Garh scored 207 runs, and P&T Gymkhana required 208 runs to win this match. This is a very fine weather today. Throughout the morning, the sun has completely coming out, and a lot of spectators are also watching the proceeding at this occasion. So, score 208 runs to chase by the P&T Gymkhana. They have also the very strong batting lineup. The two umpires who are supervising this match, umpire Abdul Makid and Tariq Rashid. The first delivery of this innings outside the off stump, they moved away into the right-hander and wicket-keeper behind the stump. Here's the next delivery, and the batsman pulled that one into the widest mid-on. Non-striker and batsman wanted to get a single, but he has to scamper to back his crease because the batsman was not ready, who was striking there, and he sends him back. No runs again, none for none. And this is the first over in progress. Once again, bowlers, he comes in, ball to the batsman, he pulled it away down to the deep square leg. Will be a couple of runs. No, it's just a single, well fielded by the fielder at deep square leg, and he just could make a single. So it's 1 for no loss. P&T Gymkhana, they have to chase 208 runs to win this match. Zishan is there, and Mir is not out on 1. 208 runs behind. The next delivery, it drives straight into the ground, and the batsman takes a single. The ball ricocheting the hands of the bowler, and the batsman picked up another single. 2 for no loss, and Zishan has opened his account. Fateh is the bowler. 4 deliveries has completed, 2 runs he has just given away. Bashir once again and bowls to Mir, and he turned it away past his square leg, and he just make a single. It's 3-0 for no loss in the first over. Keeper behind the stump, short third man, backward point, extra cover, mid-on. It's a deep square leg, wideish mid-on, and short backward square leg. Next delivery, he played it all along the grounds into the long on, and the batsman picked up another single. It's 3 for no loss. End of the over number 1, and it's over to Imran Sahel for the Urdu cricket commentary. Thank you, Tahir. और अब बॉलिंग के लिए आए हैं यहाँ पर जावेद, और सामना करेंगे मीर। जीशान सामना करेंगे। डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल का इशारा होगा यकीनन, और भागकर भी 1 रन हासिल किया यहाँ पर। सो 2 रन का इजाफा होगा बिना किसी बॉल के। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 कप 2022
दूसरा मैच आज के दिन का खेला जा रहा है। P&T जिमखाना वर्सेस अलीगढ़ क्रिकेट क्लब। हवा में खेल दिया है मिड विकेट की जानिब। रिजल्ट देखने का, फील्डर बॉल के नीचे है और ये कैच आउट। खूबसूरत कैच यहां पर। को दिखाते कि आगे गिरे हुए बॉल को, स्लो बॉल था, हवा में खेला मिड विकेट की जानिब। और पहला नुकसान यहां पर P&T जिमखाना को। पहली विकेट गिरी है और मीर आउट होने के बाद वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए। पहली कामयाबी यहां पर हासिल की है अलीगढ़ क्रिकेट क्लब ने। नए आने वाले बैट्समैन है वसीम। जावेद एक बार फिर बॉलिंग के लिए तैयार और फिर बॉल किया है आगे और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान खेला। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने बॉल को फील्ड किया। एक रन यहां पर हासिल हुआ है P&T जिमखाना को और अब जिशान सामना करेंगे जावेद का। कामयाब ओवर अब तक का जावेद का। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 कप स्पॉन्सर्ड बाय नबील अहमद, ऑर्गेनाइज्ड बाय शेफ डार। इस पर फिर आगे बॉल किया है, थोड़ा छोड़कर बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रहे हैं, नया बॉल कर रहे हैं। शॉर्ट रन अप के साथ तकरीबन 13 से 15 कदमों का रन अप। डाउन द लेग साइड खेल दिया है इस पर। फाइन लेग की जानिब, फील्डर बॉल के पीछे हैं लेकिन रोकने में नाकाम रहेंगे और यहां पर पहली बाउंड्री हासिल हुई है P&T जिमखाना को। खूबसूरत स्क्वायर लेग से ऊपर। रिप्ले में आप देखिए कि डाउन द लेग साइड बॉल अंदर आया और खेल दिया है आसानी से फाइन लेग की जानिब 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ते हुए 11, 1 विकेट के नुकसान पर। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 कप 2022 और स्पॉन्सर्ड बाय नबील अहमद, ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉल्टन ग्रीन्स क्रिकेट डाउन द लेग साइड वाइड बॉल का यकीनन इशारा हो गया यहाँ पर मुकीत काकड़ की जानिब से। हाल ही में मुकीत काकड़ जो है वो PSL पे अपने जो फराज मनसबी थे वो सर अंजाम देने के बाद दोबारा से डोमेस्टिक और ग्रास रूट क्रिकेट पे वापस आते हुए। उनके साथ स्क्वायर लेग पर मौजूद अंपायर हैं तारिक रशीद, वो भी PCB लीड पैनल के अंपायर हैं और इस बार क्रॉस खेलना चाहते थे, बिल्कुल ब्लाइंड शॉट, प्री प्लान था। बल्ला कहां, नजर कहां और बॉल कहां। जावेद एक मरतबा फिर डाउन द लेग साइड बॉल, वाइड बॉल और खासा नीचे रहा, बीट कर चुके हैं बॉल को और 5 रन आएंगे इस बॉल पर विकेट कीपिंग और पुअर बॉलिंग पर जावेद की जानिब से। और मुसलसल टांग पर बॉल कर रहे हैं और इस पर तो विकेट कीपर भी साथ नहीं दिया उनका। बॉल क्योंकि बॉल पर के पीछे आए जरूर, जितनी देर में बॉल के पीछे आते बॉल मिस हो चुका था और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। जावेद एक मरतबा फिर और इस दफा खेला है
कवर की जानिब किसी रन का कोई इजाफा नहीं, और इस तरह दूसरा ओवर भी अपने अख्ताम को पहुंचा और स्कोर है 18, एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में एक विकेट जरूर हासिल किए लेकिन रन्स बहुत ज्यादा हैं। So 18 for the loss of 1 wicket. Wasim is not out on 1 and Zishan is not out on 6. Javed is the bowler and end of the 2 overs is 18 for the loss of 1 wicket. P&T Gymkhana, they have required 208 runs to win this match. Colonel Fateh Sher Memorial T20 Cricket Cup 2022 is underway. The next delivery, and he's gone. Yes, he's out. So the second wicket down. It's a 19 for the loss of 2 wickets. P&T Gymkhana. We will repeat again in the replay how the batsman was. Bashar, he just delivered the ball and the batsman played an unusual stroke into the offside, and at extra cover the fielder gets a very easy catch, and that's the end of the wicket number 2. So 19 for the loss of 2 wickets. Zishan just gone for 6. His first wicket. For the loss of 1 wicket. P&T Gymkhana. Huge target has been given by the early Garh. And the next delivery, he also played high in the air. Another catch. Yes, he's gone. Very fine catch taken by the fielder at deep extra cover. Look at that again. He played it high in the air into the deep extra cover. It was a fine running catch taken by the fielder, and that's the end of the wicket number 3. Nakib is out, caught at deep extra cover. Deal is the new man in. It's a 19 for the loss of 3 wickets. And Mubashir, he's on hat-trick now. And P&T Gymkhana, they are in trouble after the dismissal of 2 wickets early. So 3 wickets down, 19 runs on the board. Mubashir once again from the pavilion end.
directly into the offside. He takes a very quick single. He's off the mark, and score moves now to 20 for the loss of 3 wickets. P&T Gymkhana, they have to score 208 runs in 20 overs, but 3 wickets down early part of the game, 20 runs on the board. And Adil, they both are in the middle of the back foot and punch into the deep cover point, and he takes another single. He's 21 now for the loss of 3 wickets. P&T Gymkhana. This is the 3rd over. Bright sunny afternoon here in Lahore. The sun is shining quite brightly throughout the day, and the cricket is playing under the very fine weather today. Once again, Mubashir comes in, racing in, and off the back foot and punch into the short extra cover. It goes 2 for 1, and he got it now. And the score moves now to 22 for the loss of 3 wickets. Mubashir has taken 2 wickets in his 2nd over and has given away only 8 runs. Such a fine piece of spell by Mubashir, once again reaching the top of his mark. No, Adil, he is not out on 1, facing up to him. Here he comes, pass to the umpire Tariq Rashid, and ball to Adil, must be a wide, and umpire Tariq Rashid expended both the hands and given him a wide. So score moves now to 23 for the loss of 3 wickets. This is the 3rd over in progress. Mubashir, 9 for 2, once again comes in. Ball to Adil, off the back foot. That's very lucky. The ball didn't get the touch of his bat outside the off stump. End of the over. So it's 3 overs gone, 23 for 3 by P&T Gymkhana. शदीद मुश्किलात का शिकार यहाँ पर P&T जिमखाना। जावेद एक मरतबा फिर अंदर आया, बॉल खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ की जानिब 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ते हुए 24। मीर हमजा 2 रन बनाकर आउट हुए। जिशान सरफराज 6 रन बनाकर आउट हुए। जावेद एक मरतबा फिर बॉल अंदर आया, खेल दिया है मिड विकेट की जानिब। फील्डर वहाँ मौजूद है लेकिन फिर भी तेजी से 1 रन मुकम्मल किया। वसीम अब्बास आउट हुए 1 रन बनाकर। नकीबुल्लाह और अदील भट्टी इस वक्त तक क्रीज पर मौजूद हैं। पीसीबी लीड पैनल के अंपायर्स मुकीद काकड़ और तारिक रशीद सुपरवाइज करते हुए इस बार फिर 3 विकेटों के दरमियान बॉल किया, खेल दिया है मिड ऑफ की जानिब, लेकिन फिर भी 1 रन जरूर हासिल किया यहाँ पर दोनों बैटर्स ने। और इस मैच की तमाम तर सूरत हाल पर निगरानी रखे हुए पीसीबी पैनल के मैच रेफरी सुहेल इदरीस। जावेद अकबर कदमों का इस्तेमाल किया है, खेल दिया है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान। स्क्वायर लेग के फील्डर ने किसी भी मौके को जाया नहीं किया है और खूबसूरत रनिंग कैच यहाँ पर। एक्सीलेंट एफर्ट, जितनी तारीफ की जाए कम है यहाँ पर यंगस्टर्स की। सो जो मकसद था इस क्रिकेट को करवाने का, उस मकसद में खासे हद तक यहाँ पर कामयाब हुए और बहुत खुश हो रहे होंगे नबील अहमद के वो जो टैलेंट है पाकिस्तानी क्रिकेट का वो सामने आते हुए। देखिए किस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया, खेला स्क्वायर लेग की जानिब और हवा में बॉल था, पूरा जज किया, रनिंग कैच यहाँ पर किया। दाद देना होगी यहाँ पर फील्डर को, खूबसूरत कैच। और एक और विकेट यहाँ पर गिरी है 4 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर है 26।
खेला है नए आने वाले बैट्समैन हाफिज ने। लॉन्ग ऑन की जानिब बेक रन यहाँ पर हासिल किया। जावेद यहाँ पर खास से मुतमईन और खुश दिखाई देते हुए 2 कीमती विकेटें उन्होंने यहाँ पर हासिल की हैं। खासा तजुर्बा रखते हैं जावेद ने एक मरतबा फिर बॉल आगे किया, मिड विकेट की जानिब बॉल गया। तो इस तरह जावेद का ये ओवर भी अपने अख्ताम को पहुंचा। स्कोर है 27, 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब माइक में दूंगा ताहिर अमीन को। एक रन हासिल किया। री को दिखाते हैं कि किस तरह से शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था और पुल करना चाहते थे लेकिन मिस टाइम हुआ। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। मुबशर फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, खासा तेज बॉल था। अच्छे तेज बॉलर हैं मुबशर और पीछे बॉल करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अंपायर ने पहले ही कह चुके हैं कि शायद एक बाउंसर जो अलाउ था वो उनको बता चुके हैं कि आप वो फायदा उठा चुके हैं। अब अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल वो द शोल्डर हाइट हुआ तो वो जरूर उसका नो बोल देंगे। मुबशर एक बार फिर खेल दिया इसमें तक कवर की जानिब। फील्डर वहां मौजूद है, खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पर और तेजी से एक रन भी मुकम्मल किया। और यहाँ पर ओवरथ्रो का रन भी यकीनन होगा क्योंकि बैकअप खासा कमजोर यहाँ पर। क्लब क्रिकेट में इस तरह की चीजें जो है वो सीखने को जरूर मिलती हैं। देखें ये जो टेलीकास्ट हो रहा है इससे भरपूर फायदा होगा और टीम्स और कैप्टन्स और प्लेयर्स जरूर इससे सीखेंगे कि किस तरह से वो अपनी गलतियां करते हैं और किस तरह किन किन चीजों में उनकी कमजोरी है। सामना करेंगे हाफिज, बॉलर है मुबशर। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, हवा में बॉल है, फील्डर बॉल के पीछे जा रहे हैं। देखना होगा कि क्या रिजल्ट होगा। एक रन मुकम्मल किया है तेजी से। 3 फील्डर बॉल के पीछे भागे लेकिन कैच किसी के हाथ में नहीं आया। खासा सेफ रहा बॉल। सो 1 रन का जरूर इजाफा हुआ है। स्कोर बढ़ते हुए 31। नकीबुल्लाह अब सामना करेंगे मुबशर का। मुबशर अब तक 4 बॉल कर चुके हैं और 13 रन उन्होंने दिए हैं। 2.4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल की हैं। कदमों का इस्तेमाल किया है और यहां पर लीडिंग एज लगा है और एक और कामयाबी यहां पर हासिल की है। जल्दबाजी यहां पर मुसलसल करते हुए अपनी टीम के लिए मुसलसल नुकसान पैदा करते हुए पीएनटी जिमखाना के प्लेयर। पीएनटी जिमखाना तारीखी अहमियत का हामिल क्लब। रिप्ले में आप देखें कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पहले से ही कर रहे थे और यही भांपते हुए कि वो बॉल थोड़ा पीछे करेंगे, कदमों का इस्तेमाल करके बॉल तक पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर वो चूके बॉल ने निप किया, बाउंस दिया, एज लगा और विकेट कीपर के हाथों में यहां पर 5वां नुकसान 31 के मजमूई स्कोर के ऊपर। वो बताएं कि आपकी स्क्रीन पर यहां पर जो ग्राउंडमैन हैं उन्होंने खूबसूरत यहाँ पर पिचेस तैयार की हैं और क्या प्रोफेशनल पिचेस यहाँ पर तैयार किए, पूरी निगाह रखते हुए वो कि कोई कमी, कोई ऐसी चीज़ ग्राउंड में जो अभी रह गई हो उसको भी फुलफिल किया जाए। सो क्रेडिट गोज टू ऑर्गेनाइजर्स मॉल्टन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब एंड शेपडार, वहाब डार, मुरम शेख साहब, नदीम साहब और स्पेशली नबील अहमद साहब फ्रॉम यूएसए जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को जो है वो सजाने में स्पॉन्सर किया और उनका बड़ा अहम किरदार इस पूरे टूर्नामेंट का जो मेला यहाँ पर क्रिकेट का सजा है, क्लब क्रिकेट का मेला। बड़े अरसे बाद यहाँ पर आपको कलर किट्स के अंदर वाइट बॉल के साथ क्रिकेट देख रहे हैं और पहली मरतबा क्लब क्रिकेट को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। मुबशर एक मरतबा फिर और इस बार थोड़ा सा हवा में पॉइंट की जानिब खेला और यहाँ पर मुकम्मल हुए।
5 ओवर और 31 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। Thank you, Imran, and that's given him out. Yes, he's gone. Leg before the wickets. That's the end of the wicket number 5 now. It's 31 for 5. Anis was the batsman who kept the LBW wrapped on his pad, and umpires has given him out. Look at that action replay once again. This crossed the line, perhaps that was, and just wrapped on his pad, and umpire has given him without any hesitation. So 31 for the loss of 5 wickets, and he's gone without scoring. Javed gets his second wicket, and this is the 5.1 overs has completed. It's 31 for the loss of 6 wickets. Now this was the 6 wickets of the inning. Beg pardon, that's the 5 wickets before that, and this was the 6th wicket down by the P&T Gymkhana. The batsman takes a single. It's 32 for the loss of 6 wickets, and Anis is not out on 1, and Syed Asad is also in the crease. So this is the 6th overs in progress. Model Town Green Cricket Club ground. That's another wicket that's going to be out. Yes, he's gone. The ball hit on his leg stump, and that's the end of the over number 7. Big gap between bat and pad, and we will look at the action replay again now. He tried to cut that one, and the ball ricocheting off his perhaps the bat or pad. Look at that again. That ball really turned and moved away and hit on his leg stump, and he is really surprised. That's so 32 for 7, and Hassan and Syed Asad, they both are in the middle. This is the 5.3 overs has completed, and P&T Gymkhana, they are very disaster at this stage. 7 wicket downs and only 32 runs on the board. P&T Gymkhana, which is the very strongest team in Lahore, and plenty of test cricket they have produced, which included Abdul Razak, Muhammad Yusuf, Javed Miandad, Imran Nazir, Halim Dar, who is the test umpire once again. I will repeat again, Halim Dar
was a very good all-rounder. He has played plenty of cricket for P&T Gymkhana. Hassan Raza is also the test umpire. And the next delivery, and the batsman placed quite comfortably into the offside, and the ball trickled out into the short extra cover, and there is no addition in the total. It's 32 for the loss of 7 wickets. Javed, 2.4 over he has bowled and has taken 2 wickets. 4 wickets he has taken so far. Incredible bowling from him, such a magnificent spell, and this is the 3rd over of his spell. 19 for 4. What a bowling from him. He's a big contender, the man of the match. Once again racing in now to bowl to answer. He comes forward and pushes into the offside, and there's no addition in the total, which is 32 for 7. End of the over number 6 now, and 3 overs bowled by Javed, and got 4 for 19. What a remarkable spell from him. Hassan is not out on without score. And the next delivery, he pulled it away down to the square leg, and the batsman ambled across for a single. It's 33 for the loss of 7 wickets by virtue of 1 run. Hassan and Syed Asad, both are in the middle. Asad is not out on 2, and now Hassan once again facing up to Mubashir. He has taken 3 wickets, and this is his 4th overs of the inning, and has given away 14 runs, and facing up to Bashir by Hassan. Once again, Bashir comes there. That's a good delivery outside the off stump, and appealed for a catch behind, and he's given. That ball was going outside the leg off stump and moved away, and the batsman tried to catch that one, took the edge of his bat, and look at that again. Short and cuts that one, edge of his bat, the ball straight into the hands of the wicket keeper. He picked up a very neatly catch, and that's the end of the innings of P&T Gymkhana. 8th wicket down, 33 runs on the board. So out come the new batsmen in. 33 for 8, P&T Gymkhana. They are really in trouble after losing 8 wickets with the regular in trouble. Mubashir gets 4 wickets, just given away 14 runs, and this is his 4th overs of the inning. 7th overs in progress.
33 for the loss of 8 wickets. And new batsman in. The first delivery, the facing by the new batsman outside the off stump. The ball goes through to the wicket keeper, and there is no addition in the total, which is 33 for the loss of 8 wickets. Syed Asad at the non-striker end, not out on 2. Mubashir Aslam batting at number 10. He's facing up to Mubashir. Muhammad Abbas, Mubashir ball to Abbas. That's a good delivery. It was a good length delivery and comprehensively beaten by the Mubashir to Abbas. Score remained 33 for the loss of 8 wickets. Mubashir once again reaching the top of his mark from the pavilion end. Has taken 4 wickets. This is his last over of his spell. He comes in now, and that's a bold aim, clean ball. That's the end of the inning of Awaz. It was a attempted yorker right into the block hole, and he didn't play that stroke, and the ball ricocheting off his leg stump, and that's the end of the wicket number 9. 33 for 9. Mubashir has taken 5 wickets for 14 runs. End of his spell. 4 overs, 14 runs, and got 5 wickets. Look at that action replay again. The dismissal of Awaz. It was at Yorker, completely York. Outcome Adnan Munir, the last man in. Adnan Mir, and the first delivery outside the off stump, and he leaves it alone, and the ball goes to the wicket keeper. And for the further commentary, it's over to Imran Sohail. थैंक यू दाहिर। शाहीन आपकी स्क्रीन पर, और यही परफॉर्मेंस शाहीन की। जावेद एक बार फिर ब्लॉक होल में बॉल किया है, इस बार अकेला है, एक्स्ट्रा कवर की जाने फील्डर ने बॉल को बीट किया, फील्डर बॉल के पीछे है, 1 रन मुकम्मल किया तेजी के साथ। और आपको बताते चले कि अभी तक पीएनटी जिमखाना का एक भी प्लेयर डबल फिगर में शामिल नहीं हुआ है। एक वक्त में पीएनटी जिमखाना का एक नाम तकरीबन 1 दर्जन के करीब टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके प्लेयर्स की लिस्ट पीएनटी जिमखाना के पास। जावेद एक बार फिर ब्लॉक होल में बॉल किया, अपनी 5वीं विकेट की तलाश में है कि वो किसी ना किसी तरीके से, जिस तरह से मुबश्शिर ने 5 विकेट हासिल की हैं, वो भी 5 विकेटों को हासिल कर सके, और किसी ना किसी तरह से वो ये विकेट जरूर लेना चाहेंगे। 3 बॉल बाकी हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा। मैच का तो रिजल्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि क्या 5वीं विकेट लेने में कामयाब होते हैं जावेद या नहीं। और इस वक्त अभी उन्होंने 3 विकेटों में बॉल किया, और बॉल सीधा बल्ले को लगा और लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए फील्डर के हाथ में। सो स्कोर मूव्स ऑन टू 35 for 9 wickets after 7.4 over. जावेद इकबाल। फुल टॉस बॉल, स्लो फुल टॉस बॉल, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो विकेट हासिल करें, और खुशी उनके चेहरे पर नुमाया।
बिजी क्रिकेटर, ऑर्गेनाइजर अलीगढ़ क्रिकेट क्लब के जावेद, आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर खुशी। 35 पर 9, P&T जिमखाना अनबिलीवेबल। और ये और कर किया है, नाकाम रहे यहाँ पर अपनी 5 विकेट लेने में, बट गुड बॉलिंग एट द एंड। 4 ओवर का कोटा उन्होंने अपना मुकम्मल किया और 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। और रेहान आए हैं बॉलिंग के लिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सामना करेंगे सैयद सरदार। और मुश्किल दिफाई अंदाज में रोका है इस बॉल को। अगर कोई भी क्लब क्रिकेटर या क्लब ऑर्गेनाइजर इस फिगर को देखे तो वो शायद हाश को उठे और वो एक दफा सकते में जरूर आए, क्योंकि P&T जिमखाना जिसका शुमार लाहौर की टॉप टीम्स में होता था, एक वक्त में तो नंबर 1 टीम थी, जब बेशुमार फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर की एक टीम बनती थी। बचाकर दिफाई अंदाज में खेला, बिल्कुल जब P&T जिमखाना अपने अरूज में थी तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि 36 के मजमूई स्कोर पर उनके 9 खिलाड़ी आउट होंगे। वेरी सरप्राइजिंग, वेरी वेरी सरप्राइजिंगली सो। और इस बार क्रॉस शॉट, पूरा आंखें बंद करके एक ब्लाइंड शॉट खेला। या खुशकिस्मत रहे बैट्समैन और बदकिस्मत रहे यहाँ पर बॉलर के, जिस तरह से सुसाइड शॉट खेला। अगर कोई चाहे तो यहाँ पर 11 ओवर की पारी भी बाकी है तो वो खेल सकता है, पर क्रिकेट इज अ पैशन गेम। अगर आप अपनी सोच समझ बूझ के साथ नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देगी। सो इट्स ऑल अबाउट अ प्लानिंग गेम। खड़े खड़े खेला है लॉन्ग ऑफ की जानिब 1 रन के लिए। सो स्कोर मूव्स ऑन टू 38 for 9। आखिरी विकेट, 1 विकेट चाहिए अलीगढ़ क्रिकेट क्लब को इस मैच को मुकम्मल करने के लिए और 2 पॉइंट हासिल करने के लिए। इस पर फिर दिफाई अंदाज में खेला, रन्स तो कोई नहीं बनेंगे लेकिन ख्वाहिश यहाँ पर होगी। और इस तरह ये ओवर भी अपने अख्ताम को पहुंचा, सिर्फ 1 रन आया। स्कोर है So 38 for 9. Thank you, Imran. So he hits it very firmly, and that's over the cross the boundary line. It's into the deep mid wicket, and that's going to be, look at that action replay once again. The ball has gone into the net. Look at that again in the another angle. He hits and at the net, and the ball went into the net. So score moves now to 44 now for the loss of 9 wickets.
Adnan is not out on 8 in 5 deliveries, and Asad is not out on 4. And no man could be reached into the double figure of the P&T Gymkhana, which is the strongest club in Lahore, has dismissed now 44 for the 9 wicket up Pishli, but straight into the short extra cover fielder, and there's no addition in the total, which is 44 for the loss of 9 wickets. And this is the over number 10th in progress, and Ali once again reaching the top of his mark to bowl to Adnan. Comes and bowl to Adnan, and he hits quite firmly into the long on, and the fielder is there. The batsman picked up a single. It's 45 now for the loss of 9 wickets. Adnan moves now to 9, and Asad is not out on 4. Asad now facing up to Ali. He comes in right arm and he bowls to Asad. He played it into the extra cover and just takes a single. It's 46 now for the loss of 9 wickets. This will be the first batsman who could reach the double figure. Adnan just 1 run away, not out on 9. Facing up to Ali once again. He comes in right arm, ball to Adnan, comes forward, lunges forward, and the ball ricochets in the hands of Ali, and there's the end of the over. So 10 overs gone. It's 46 for the loss of 9 wicket. The Gymkhana. Adnan. Fateh Sher Memorial T20 Cricket Cup 2022. This is the second match between P&T Gymkhana and Aligarh. Aligarh scored 207 runs. In reply, they are 46 for the loss of 9 wickets. In comes Rehan once again. He comes in, ball to Asad. He drives that one through the widest mid wicket. That's going to be 4 runs. That's a 50 up now. It's 50 for the loss of 9 wickets, and P&T Gymkhana, they are 50 for 9. Nabil Ahmad, who is doing this whole the tournaments, honor of Michigan Cricket Stars professional team, Cricket League USA, also the former CEO of United States Cricket Association, and Middleton Cricket Club Greens. They are organizing this fabulous cricket event in Lahore. And once again, Rehan flighted one, and there's a chance for a catch. High in the air ball, and the fieldsman gets under it, and finally he takes the catch. So Javed, who took the catch. So end of the innings of P&T Gymkhana, they dismissed 50 for all out, and Rehan picked up his first wicket, and finally Aligarh Cricket Club won the match by the huge margin of 157 runs. Such a fine victory from Aligarh, very convincing one, and they bundled out to the P&T Gymkhana in just 50 runs, and a fine piece of bowling from Mubashir and Javed. They pick up to 5 and 4 wickets respectively, and that's the end of the innings of P&T Gymkhana. Over to Sohail now. बिल्कुल एक भी प्लेयर जो है वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका. आप देख सकते हैं कि कितने खुश दिखाई दे रहे हैं अलीगढ़ क्रिकेट क्लब के तमाम प्लेयर्स, और यहाँ पर एक गुडविल जेस्चर शो करते हुए, और अंपायर्स भी यहाँ पर वापस आते हुए आप देख सकते हैं कि P&T जिमखाना के प्लेयर्स हैंडशेक करते हुए, और एक अच्छी विक्ट्री यहाँ पर अलीगढ़ क्रिकेट क्लब के लिए. सो
का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर लीडिंग कैच लगा और 31 5 विकेटों के नुकसान Another wicket that's going to be out. It's 33. For a catch behind.
at the end of the inning of very very surprising. और इस बार का क्रॉस शॉट पूरा आंखें बंद करके ब्लाइंड शॉट खेला या कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 कप 2022 आज जो मैचेस खेले गए उसमें जो दूसरा मैच है वो P&T जिमखाना वर्सेस अलीगढ़ क्रिकेट क्लब था और इस मैच को एक बड़े मार्जिन के साथ 159 रन से जीता है अलीगढ़ क्रिकेट क्लब ने। पहले खेलते हुए अलीगढ़ क्रिकेट क्लब ने 207 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर, और अगर बैटिंग की बात की जाए तो महाज ने 67 रन की इनिंग खेली 45 बॉल के ऊपर, असद अली ने 36 रन की इनिंग खेली। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो P&T जिमखाना की जानिब से 4 ओवर में 24 रन देकर वसीम ने 2 खिलाड़ी को आउट किया और पूरी टीम जो थी वो 50 रन पर आउट हुई। P&T जिमखाना की सिर्फ 10.4 ओवर ही खेल सकी, कोई भी प्लेयर जो था वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दो सामने है, जिसमें जावेद इकबाल ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया और मुबशर असलम ने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उनके साथ। और इब्तदाई 8 ओवर में तकरीबन पूरी टीम आउट, 9 खिलाड़ी आउट हुए। 4 ओवर में मुबशर इकबाल ने 14 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विनिंग कैप्टन अलीगढ़ क्रिकेट क्लब से। सब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जिस तरह से क्लब क्रिकेट यहाँ पर हो रही है, और यही एक माजी में भी टेस्ट हुआ करता था कि क्लब क्रिकेट कितनी स्ट्रांग है पाकिस्तान की, और एक नए टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है यहाँ पर। क्या कहेंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज़र का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है ये लड़कों को कि एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। बाकी हमारी टीम ने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उसमें पहले बैट्समैन ने अपना रोल अदा किया, उसके बाद हमारे फास्ट बॉलर्स ने अपनी जो थी वो
जॉब फुलफ़िल की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे मार्जिन से। लास्ट मैच में जावेद नहीं खेले थे, उनके आने से क्या फ़र्क पड़ा? जी, जावेद एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं और हमारी टीम का लाजमी जुज़्व हैं। तो पिछले मैच में उनकी हमने कमी महसूस की थी और इस दफ़ा आज उन्होंने अपना रोल अदा किया। डे बाय डे टूर्नामेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो आपको तैयारी और ज़्यादा करनी है। जी, इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना सेमीफाइनल तक जगह बनाएं और बाकी जो हमारे आने वाले मैचेस हैं उसमें हम अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच एंड्रियास, गुड लक रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। सो हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी हैं वो मॉल्टन हाउसिंग सोसाइटी स्पोर्ट्स बोर्ड के हेड हैं मियां रिजवान साहब। वो यहाँ पर आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे। उनके साथ पीसीबी पैनल के मैच रेफरी हैं सुहेल अदरीस साहब हैं, शुएब डार साहब हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उसके साथ खुरम शेख साहब हैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं। उनके साथ दीगर दो मेहमान भी मौजूद है इस कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 कप 2022 के। सो ज्यूरी ने जो डिसाइड किया मैन ऑफ द मैच वो हैं मुबशर असलम। मुबशर असलम को मैन ऑफ द मैच, कैश प्राइज 2000 रुपीज मियां रिजवान साहब देंगे। वेल डन मुबशर। मुबशर यार, मुबशर ज़बरदस्त बॉलिंग यार, आज काफ़ी तेज़ बॉल आपके देखने को मिले और खासी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और मैं अपनी टीम वालों के जिन्होंने मुझ पर रिलाइज़ किया। और सबसे जो बड़ी बात थी कि मेरे कप्तान ने एक ही बात कही थी कि लाइन और लाइन पे बॉलिंग करनी है और बाकी आप पे छोड़ दो। कैसा देख रहे हैं टूर्नामेंट का एनवायरनमेंट और जिस तरह से लाइव ऑर्गेनाइज किया गया है नबील अहमद की जानिब से और साथ ही साथ यहाँ पर मॉल्टन क्वींस इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट? जी बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। जो मॉडल टाउन, जब मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, सबसे अच्छा टूर्नामेंट ये मॉडल टाउन में ये हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक आपको पूरे टूर्नामेंट के लिए। तो यहाँ पर एक शील्ड है जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से दी जा रही है और मियां रिजवान साहब मॉल्टन हाउसिंग सोसाइटी के जो स्पोर्ट्स के जो है स्पोर्ट्स बोर्ड के हेड भी हैं और साथ ही उनको इंतजामिया की जानिब से एक शील्ड जो है वो शुएब डार साहब जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। प्लीज़ सर। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का।